Hello my dear students, once again I welcome you all to RBS Classes, the Pariksha Guru, and as you know that we are live now, and I would like to urge you in order to take admission to get all the serialized videos as full course, and for that you have to show all the numbers given on the board in order to know the procedure, and only after that you can take admission. As I did yesterday in the previous video, that I brought a lot of questions for you but without option, because up to that extent I think that there are a lot of things in your life, there are a lot of problems in your life when you don't have any option, and you have to cross that solution, you have to solve that problem. Do you understand why what I am trying to make you understand? That we very smart, we very technical, we very attentive, and carry everything inside your brains, not in your notebooks, not in your absence. So I directly shift to my questions. I have brought a very good question for you, a lot of very good questions for you, and here I shift to my topic, and the very first question is going to come on your board. The first question: this has been asked in your exam. Who called Lady Macbeth? Who called Lady Macbeth the fourth witch? The fourth witch of the play मैकबेथ. अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं क्लियर कर दूं कि जिस प्ले की बात मैं यहां कर रहा हूं, इट्स टाइटल इज मैकबेथ. जिस प्ले की बात मैं यहां कर रहा हूं उसकी टाइटल क्या है? मैकबेथ. मैकबेथ इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर. यू मस्ट नो दिस. मैकबेथ में 3 चुड़ैलें हैं, लेकिन मैकबेथ की जो वाइफ है लेडी मैकबेथ, who is very dominating female character, she has been called the fourth witch by someone. And who is this someone? और ये someone है कौन? किसने लेडी मैकबेथ को चौथी चुड़ैल कहा? उनके अनुसार, जिसने भी कहा उनके अनुसार, प्ले मैकबेथ में, ट्रेजेडी मैकबेथ में 3 चुड़ैलें नहीं है बल्कि 4 चुड़ैलें हैं. ये चौथी चुड़ैल कौन है? ये है लेडी मैकबेथ. यहां एक फैक्ट मैं और बता दूं. Her name has not been given in the play. इसका नाम क्या है ये पूरे प्ले में कहीं नहीं दिया गया है. It has not been given in the play. लेडी मैकबेथ का नाम क्या है ये पूरे प्ले में कहीं नहीं दिया गया है. इनको एक विशेष नाम से, एक विशेष उपाधि एक किसी विशेष व्यक्ति ने दे दिया. और वो कौन थे जिन्होंने दिया इनको? कहा क्या? चौथी चुड़ैल. तो उनका नाम है, आंसर आपका जो है वो है S.T. Coleridge. S.T. Coleridge. पूरा नाम Samuel Taylor Coleridge gave this name to Lady Macbeth.
Samuel Taylor Coleridge was the man who called Lady Macbeth the fourth witch of the play. तो इन्होंने लेडी मैकबेथ को चौथी चुड़ैल कहा। ध्यान रहे, कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कुल कितनी चुड़ैलें, हाउ मेनी विचेस आर देयर इन प्ले मैकबेथ। तो आप इस चौथी चुड़ैल को मत जोड़ लीजिएगा कि 3 तो वो थी और एक कॉलरिज ने बताया 4, तो 4 चुड़ैलें हैं। नहीं, हैं जो फिजिकली वो 3 चुड़ैलें ही हैं, चौथी नहीं है, लेकिन कॉलरिज ने इनको कहा है, तो इसका मतलब चुड़ैल नहीं हो गई, कॉलरिज के विचार में ये चुड़ैल है। ठीक है, नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ many poems are there in the first edition of lyrical ballads that took place in 1798? In 1798. This is a very important question. This may be very important question. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि लिरिकल बैलेट्स, यहां कुछ खास बातें मैं आपको लिरिकल बैलेट संबंधित बताऊंगा, वो आप ध्यान में रखिएगा। लिरिकल बैलेट्स वह रचना है जिसके साथ माना जाता है कि रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। इट इज सपोज्ड दैट विथ लिरिकल बैलेट्स बिगिंस रोमांटिक एज। Lyrical ballads was published for the first time in 1798 as the first edition. Its second edition came in 1800, third edition came in 1802, and fourth edition and last edition came in 1805. तो कुल इसके कितने एडिशंस आए? There are 4 editions. Look at it. There are 4 editions. Dates कौन कौन सी हैं? 1798, 1800, 1802 and 1805. These are the editions. This was published in America too. This was published in America in 1803. ध्यान रहे, हम जिस एडिशन की बात कर रहे हैं, दिस इज द एडिशन। हमें यह पूछना है कि 1798 में जो पहला एडिशन आया उसमें कुल कितनी कविताएं थी, यही हमें जानना है। हाउ मेनी पोएम्स वर देयर? तो आपका जो जवाब है, देयर वर 23 पोएम्स इन ऑल। कुल कितनी कविताएं थी? 23 पोएम्स वर देयर इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स के पहले एडिशन में कुल 23 कविताएं थी और इन 23 कविताओं में 19 बाय वर्ड्सवर्थ, and 4 by Coleridge. There were 23 poems. कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में. There were 23 poems in all
in the first edition of Lyrical Ballads. 19 by Wordsworth, 4 by Coleridge. This edition begins with the poem by S.T. Coleridge. The first poem of this edition is Rime of the Ancient Mariner. And the last poem of this edition is Tintournabe. These are very important things. जितनी बात इस पूरे बोर्ड पर लिखी गई है और जितना मैंने इससे संबंधित बोला है, अगर ये सारी बातें आपके मस्तिष्क में रहेंगी तो एटलीस्ट वन क्वेश्चन डेफिनेटली यू विल फाइंड इन योर एग्जाम. आपके एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा. एक बात और जान लीजिए कि इन द सेकेंड एडिशन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क इन प्रोज ऑफ दैट टाइम was added, included, and it was preface to lyrical ballads. Preface to lyrical ballads. Preface to lyrical ballads. Next question. Third question. Who gave the phrase fancy and imagination? फैंसी एंड इमेजिनेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, इसको किसने दिया है? Who has given the concept of fancy and imagination? सबसे पहले मैं इसका उत्तर दूंगा and only after that I'll start describing it. It is S.T. Coleridge. Again, Samuel Taylor Coleridge. Fancy and imagination. In his great writing Biographia Literaria नामक अपनी महान रचना में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया फैंसी एंड इमेजिनेशन का. फैंसी इज वेरी पावरफुल. फैंसी इज स्ट्रेंथ. फैंसी इज अ पावर टू कलेक्ट द थिंग्स, कलेक्ट डिस्पोज थिंग्स. बिखरी हुई चीजों को इकट्ठा करने की शक्ति होती है फैंसी में. फैंसी जो होती है वो बिखरी हुई डिस्पर्स चीजों को इकट्ठा करती है, एक जगह कर देती है. ठीक है. और इमेजिनेशन का काम होता है, इमेजिनेशन इज जस्ट टू डिस्पर्स द थिंग्स. इमेजिनेशन चीजों को बिखेरती है. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इफ यू हैव हैंडफुल मस्टर्ड सीड. मान लीजिए आपने हैंडफुल, मुट्ठी भर सरसों के दाने हाथ में ले लिए एंड फ्लिंग्ड इट. इसको ऐसे आपने बिखेर दिया ऑन द फ्लोर. तो जो बिखर गया, जो एक इमेज बन रही है, दैट इज जस्ट द इमेज ऑफ इमेजिनेशन. बिकॉज यू हैव डिस्पर्स द थिंग. वट एवर यू डिड दैट वाज द वर्क ऑफ इमेजिनेशन. वो कल्पना का कार्य था जो आपने किया. बिखेरने का काम आपने किया, बिखेर दिया आपने. अब जब फैंसी अपना काम शुरू करेगी तो वो चीजों को इकट्ठा करेगी, कलेक्ट करके फिर इसी मुट्ठी में ला देगी. तो फैंसी इज एन ऑर्गेनिक पावर. ये ऑर्गेनिक पावर होती है. ठीक है. अनदर क्वेश्चन. एक फैंसी और इमेजिनेशन से संबंधित एक कॉन्सेप्ट मैं और आपको बता दूं. कॉलरिज ने बताया कि इमेजिनेशन इज ऑफ टू काइंड्स. कॉलरिज ने बताया कि जो कल्पना होती है वो दो प्रकार की होती है. इमेजिनेशन इज ऑफ टू काइंड्स. एक होती है प्राइमरी इमेजिनेशन और एक होती है सेकेंडरी इमेजिनेशन. प्राइमरी इमेजिनेशन और एक होती है सेकेंडरी इमेजिनेशन.
प्राइमरी इमेजिनेशन इज possessed by all. We all possess primary imagination. प्राथमिक कल्पना जो होती है वो सबके पास होती है. एक आम व्यक्ति भी प्राथमिक कल्पना करने में सक्षम होता है. हमें या भविष्य की कुछ बातें बनाते हैं, भविष्य की कुछ तैयारियां करते हैं, कुछ कल्पनाओं में बुनते हैं. हर व्यक्ति कल्पना की दुनिया में रहना चाहता है. Everyone wants to live in the world of imagination. बस कुछ होता है. वहीं सेकेंडरी इमेजिनेशन जो होती है, इट इज possessed by very some people, very few people. Secondary imagination is possessed by some extraordinary people. And according to S.T. Coleridge, lover, lunatic and poet, पागल, प्रेमी और कवि, these are of same category. ये तीनों एक कैटेगरी के होते हैं. These may be called extraordinary. The secondary imagination is possessed by these three persons. ये तीन लोगों द्वारा ये पाई जाती है. Second, the imagination, when we talk of imagination literature, actually we talk of the secondary imagination. जब हम imagination की बात करते हैं कहाँ, अपने साहित्य में, तो वास्तव में हम इसी सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात कर रहे होते हैं, ना कि प्राइमरी इमेजिनेशन की बात. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज गिवन और हु हैज कॉइन्ड द फ्रेज who has given the phrase willing suspension of disbelief. सवाल यह है कि किसने इस फ्रेज को क्वाइन किया या किसने इस फ्रेज को साहित्य में लाया, किसने ये फ्रेज दिया, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. इस फ्रेज को किसने दिया है? विलिंग सस्पेंस. सबसे पहले मैं इसका उत्तर दूंगा एंड ओनली आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट. दिस फ्रेज वाज गिवन बाय again S.T. Coleridge. S.T. Coleridge. What is willing suspension of disbelief? As you know that when collaboration of Wordsworth and Coleridge took place, जब Wordsworth और Coleridge का collaboration आया, Wordsworth decided to deal with nature and Coleridge decided to deal with supernatural. And supernatural was an object in which it was not easy to believe. जिस पर विश्वास करना आसान नहीं था. Supernatural was such a thing. Supernatural ऐसी चीज थी. अब whenever we go through the writings of S.T. Coleridge, there are a lot of things that we actually don't believe on. And this is the problem. ये problem है. And when we don't believe the things, we cannot enjoy it. We will fall in the logic of the things, that is it right, is it genuine. We'll start asking questions to ourselves. हम अपने आप से ये सब सवाल पूछना शुरू कर देंगे. And that would not be right. वो अच्छा नहीं होगा. Will not be able to enjoy it. हम इसे enjoy नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो कोलरिज ने अपने पाठकों से कहा, अपने जो फैंस थे उनसे कहा कि if you want to enjoy poetry, if you want to enjoy especially his poetry,
don't fall in the logic. If you start disbelieving the things, you will not be able to. If you start disbelieving the things, you will not be able to enjoy poetry. So suspend all the disbeliefs willingly. यह जानते हुए कि अच्छी बात नहीं है, अपने अविश्वासों को हमें नहीं सस्पेंड करना चाहिए, फिर भी इन ऑर्डर टू एंजॉय पोएट्री ऑल द डिसबिलीव्स मस्ट बी सस्पेंडेड. सारे डिसबिलीव्स को सस्पेंड कर दीजिए. जितने अविश्वास आपके मन में आ रहे हैं उनको दरकिनार करिए और एंजॉय पोएट्री. बहुत कुछ हो सकता है. जैसे आज की फिल्मों में आप देखते हैं कि हीरो बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को अकेले पटक पटक के मार रहा है, उड़ा रहा है. नॉट पॉसिबल. आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्या यह संभव है, इज इट पॉसिबल. लेकिन अगर आप सवाल पूछने लगेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय इट. तब तो उसके सही गलत में पड़ जाएंगे. यू विल फॉल इन द वर्ल्ड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय इट. सो सस्पेंड ऑल द डिसबिलीव्स willingly and start enjoying it. Start enjoying poetry. Next question. The poem The Wasteland The Wasteland is divided in how many parts? Fill in the blanks के लिए जो मैंने स्थान छोड़ा है वहीं आपको ये बताना है कि कितने पार्ट्स में द वेस्टलैंड को डिवाइड किया गया है. वेस्टलैंड कुल कितने पार्ट्स में है ये आपको बताना है. कितने पार्ट्स हैं वेस्टलैंड के. सबसे पहले I would like to tell you that this very poem was written in 1922. This was published in 1922. And this became the most controversial poem of 20th century. 20वीं शताब्दी की सबसे ज्यादा विवादास्पद पोएम कही गई. Why? Because it was not easy to explain this poem. इस पोएम को एक्सप्लेन करना लगभग असंभव था, क्योंकि this poem could be explained on more than 10 axes. 10 axes से भी ज्यादा पैमाने पर इसे हम एक्सप्लेन कर सकते थे. And it was not easy. The Golden Bough and From Ritual to Romance, there were two books based on mythology. And these two books could help you to explain this poem. इन दोनों को जब आप जम कर पढ़ते तब शायद आप एक्सप्लेन कर पाते इस पोएम को. This is very important thing. The first of all, this poem was by T.S. Eliot. Thomas Stans Eliot ने ये पोएम लिखी है. T.S. Eliot, Thomas Stans Eliot. He was a classicist in criticism, you know. तो टी.एस. एलियट ने ये पोएम लिखी, 1922 में पब्लिश हुई. इसको उन्होंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया. कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में. द वेस्टलैंड हैज बीन डिवाइडेड टू 5 पार्ट्स. ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. उन 5 पार्ट्स को मैं लिख देता हूं, आप देख लीजिए. इसका जो पहला पार्ट है वो है Burial of the Dead. दूसरा है
अ गेम ऑफ चेस, कहीं कहीं आपको द गेम ऑफ चेस भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तीसरा है द फायर सरमन। चौथा है डेथ बाय वाटर। इसको छोटा कर लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। डेथ बाय वाटर एंड लास्ट वन इज व्हाट द थंडर सेड। These are the 5 parts. ये 5 parts हैं किसके? वेस्टलैंड के। These are the 5 parts of वेस्टलैंड। Burial of the dead, a game of chess, the fire sermon, death by water, and what the thunder said. These are the 5 parts of the wasteland. ठीक है? एक और फैक्ट यहां बता दूं, narrator of this poem is Tarasius. T-I-R-E-S-I-A-S. Tarasius is the narrator of this poem. ठीक है? Narrator of this poem is Tarasius. Now next question. Who coined the phrase stream of consciousness technique? A stream of consciousness technique. Who coined this phrase? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टेक्निक से बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बहुत बड़े फिगर्स माने जाते हैं इस टेक्निक से संबंधित, लेकिन वो इसके क्वाइन करने वाले लोग नहीं हैं। कीप इनसाइड योर ब्रेन्स। जैसे हम बात करें वर्जीनिया वुल्फ की, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से डील करती हैं। हम जेम्स जॉइस की बात करें, हेनरी जेम्स की बात करें, ये सब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक से डील करते हैं। आजकल बहुत सारी फिल्में आप देखते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक से डील करती हैं। लेकिन हु क्वाइन दिस पर्टिकुलर फ्रेज, इस पर बात दूसरी हो जाएगी, तो मैं लिख देता हूं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स इज द आंसर। कहां इन्होंने क्वाइन किया इस टेक्निक को? इन हिज राइटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जाम में कभी भी आ सकता है और आया भी है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, दिस इज अ राइटिंग इन विच विलियम जेम्स coined this particular phrase, stream of consciousness technique। सवाल ये उठता है कि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है क्या?
आपके मस्तिष्क में सदैव एक चेतना की धारा बहती रहती है। उसी धारा के प्रभाव में आकर जब आप कोई काम करते हैं तब उसे मैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, चाय बनाने के दौरान आप एक पत्र भी लिख रहे हैं, एंड यू वर राइटिंग अ लेटर टू योर मदर, अपनी माता जी के लिए एक पत्र लिख रहे हैं। आप खोए हुए हैं, माता जी मेरा हाल चाल ये है, मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मेरे जिंदगी में ये दिक्कतें हैं। अचानक आपने देखा कि चाय उबल रही है और दौड़कर आप गए, चाय को जो उबलना था उसको बंद किया, और जब लौट के आए तो उसी धारा प्रवाह व्यवस्था में आपने ये भी लिख दिया कि मम्मी चाय उबल रही है और मैं उसको बंद करने जा रहा हूं, मैं बंद करके आ गया। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपको पता भी नहीं चला कि आपने उस घटना का वर्णन भी उसी में कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक व्यवस्था चल रही थी। क्या व्यवस्था चल रही थी? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक की व्यवस्था चल रही थी। आपका मस्तिष्क ही वो स्थान है जहां जो डिस्पर्स्ड बिखरे हुए विचार होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो दिस इज द कलेक्टिंग प्लेस। ठीक है, ये कलेक्टिंग प्लेस होता है। तो किसने इसकी चर्चा की? इसने ये चर्चा की गई प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में। किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which play of William Shakespeare has been called an artistic failure? विलियम शेक्सपियर के किस प्ले को आर्टिस्टिक फेलियर कहा गया है और किसने आर्टिस्टिक फेलियर कहा है? Who called his play artistic failure? Here you have just one word as your answer, but I am going to tell you something more about this answer. Which play? Your answer is Hamlet. Hamlet has been called an artistic failure. Now the question arises that who called it artistic failure? किसने इसको artistic failure कहा है? Who called this artistic failure? Your answer is Hamlet, and T.S. Eliot called Hamlet an artistic failure. And where did he call this play artistic failure? In his essay Hamlet and his problems. And in which year this essay was published? This essay was published in 1919. A lot of facts have been given here on your board. यहाँ बहुत सारे फैक्ट्स आपके सामने दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, छोटे मोटे फैक्ट्स नहीं हैं, ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपके सामने दिए गए हैं। कभी कभी इस एसे को, समटाइम्स दिस एसे इज कॉल्ड हैमलेट ऑफ 1919। इसको हम हैमलेट ऑफ 1919 भी कहते हैं। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is,
Who defined poetry? Who defined poetry as criticism of life? किसने पोएट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहा? Who defined poetry as criticism of life? किसने पोएट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहा है? पोएट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहा है? आंसर इज मैथ्यू Arnold. Matthew Arnold called poetry a criticism of life. Now, what is criticism? अगर पोएट्री को समझना है आर्नल्ड के निगाहों से तो आप कहेंगे पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज क्रिटिसिज्म? तो मैथ्यू अर्नल्ड इसे डिफाइन करते हैं, कहते हैं क्रिटिसिज्म इज अ डिसइंटरेस्टेड एंडेवर. यहां आप देख सकते हैं क्रिटिसिज्म इज अ disinterested endeavor to learn and propagate the best that is known and thought in the world to create an idealistic and imaginative world. This is the definition of criticism by Matthew Arnold. और यही जो डेफिनेशन है क्रिटिसिज्म की, इसी क्रिटिसिज्म को वो क्या कहते हैं? दिस क्रिटिसिज्म इज नोन एज पोएट्री, बट दिस क्रिटिसिज्म शुड बी द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. लाइफ की क्रिटिसिज्म को जब हम देखते हैं तो मैथ्यू अर्नल्ड से क्या कह देते हैं? इसे वो क्या कहते हैं? इसे वो कह देते हैं पोएट्री. उनके अनुसार ये पोएट्री है. ध्यान रहे. मैथ्यू अर्नल्ड के बारे में एक फैक्ट जान लीजिए. एज अ पोएट ही वॉज अ रोमांटिक, बट एज अ क्रिटिक ही वॉज अ क्लासिसिस्ट. एंड मैथ्यू अर्नल्ड इज नोन एज अ क्रिटिक मोर देन अ पोएट. मैथ्यू अर्नल्ड एक क्रिटिक के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं, एक पोएट के रूप में ये कम जाने जाते हैं. ये आपको ध्यान रहे. ठीक है. तो जब भी एक क्वेश्चन की बात होती है तो ध्यान में रखा करिए कि एक क्वेश्चन ये नहीं है, एक क्वेश्चन एक कतई नहीं है. ये है एक क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन. अगर मैंने इतने क्वेश्चन आज आपको बताए, अगर ढूंढ के देखेंगे तो उसमें आपको कम से कम सैकड़ों फैक्ट्स पता चल गए होंगे, सैकड़ों फैक्ट्स पता चल गए होंगे. लेकिन उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहां से हम कौन सा फैक्ट्स निकाल कर तैयार कर लें. इतना आसान नहीं होती हैं चीजें जितना आसान आमतौर पे लोग समझ लेते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Who
phrase किसने नेगेटिव कैपेबिलिटी फ्रेज को क्वाइन किया? ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको एक नाम लेना है तो आपको नाम केवल एक लेना है। अगर पूछा जाए किसके लिए किया तो आपको पता होना चाहिए। केवल इतनी बात आप याद रखिए, जॉन कीट्स इन हिज लेटर्स, जॉन कीट्स फॉर विलियम शेक्सपियर। जॉन कीट्स ने इसको क्वाइन किया। किसके लिए क्वाइन किया? विलियम शेक्सपियर के लिए। उन्होंने केवल इतना कहा कि विलियम शेक्सपियर हैड नेगेटिव कैपेबिलिटी। विलियम शेक्सपियर के पास नेगेटिव कैपेबिलिटी थी। नेगेटिव कैपेबिलिटी सिंपली मींस कैपेबिलिटी टू नेगेट वनसेल्फ। जब अपने आप को भूल जाने की आप क्षमता रखें तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। अगर आप एक पोएट हैं तो उस समय केवल आप पोएट बन के सोचिए, आगे पीछे कुछ भी मत सोचिए। अगर आप एक साहित्यकार हैं तो केवल साहित्यकार बन के सोचिए। अगर आप एक भिखारी हैं तो केवल भिखारी बन के सोचेंगे, तभी आपका रोल अदा ठीक से हो पाएगा। मान लीजिए एक कोई फिल्म चल रही है, कोई ड्रामा है, उसमें कोई कैरेक्टर है जो चोर है, लेकिन वास्तविक जीवन में वो बहुत धनी है। तो अगर वो अपने वास्तविक जीवन के बारे में सोच लेगा तो he will not be able to play his role accurately। अच्छा करने के लिए जरूरी है कि आपको नेगेटिव कैपेबिलिटी से होके गुजरना है। So these were the questions that I discussed today। आज मैंने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, हर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे 2-2, 4-6, 10-10 क्वेश्चन तक मैंने बताए हैं, मतलब 10-10 फैक्ट्स तक बताए हैं। तो अब टू व्हाट एक्सटेंट आई थिंक कि आप लगभग 100 फैक्ट्स से रूबरू आज हुए होंगे।